Hi guys, this is Crazy Beauty here and welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to do this makeup look. So I will try to do my best to look exactly like this. तो बहुत try करूँगी ताकि ऐसी finishing आ सके. So without any further delay, let's get started. If you want flawless makeup, you should wash your face properly because अगर ढंग से नहीं धोया है और कुछ डर्ट रह गया है तो लिटरली बहुत केकी लगेगा और कुछ इस तरीके का लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. इट्स बेटर टू वॉश योर फेस प्रॉपर्ली विथ नॉर्मल फेस वॉश. तो उसके बाद आप अपने प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर लगाना, उसके बाद आपका प्राइमर या फिर वॉट एवर यू यूज व्हाइल डूइंग मेकअप. यू शुड डू दैट, बट बिफोर दैट यू मस्ट वॉश योर फेस. तो मैंने ऑलरेडी फेस को वॉश कर लिया है. इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ निविया का सॉफ्ट पोमोग्रेनेट फ्लेवर वाला क्या है, कोल्ड क्रीम है ना, सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र. ओके, तो ये एक्चुअली मैं निविया का यूज़ कर रही हूँ. मैंने निविया का नॉर्मल कोल्ड क्रीम भी यूज़ किया था, उससे मेरा फेस काला पड़ गया था. आई डोंट नो व्हाई इट डजंट सूट मी. तो मैंने पॉन्ड्स का क्रीम यूज़ किया, कोल्ड क्रीम. आई नो पॉन्ड्स कोई लगाता नहीं है, बट मेरी स्किन इतनी ड्राई है कि मुझे बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है. तो फिलहाल मैं इससे खुश हूँ. इट्स नॉट टू मच और टू लेस ऑफ मॉइस्चराइज़र, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. सो आई विल अप्लाई दिस. आई विल स्टार्ट अप्लाइंग वाइट पेंट. यस, वाइट पेंट. क्योंकि मैंने एक जगह सुना था, कोई रील में मैंने देखा था कि अगर फिल्टर जैसा लुक चाहिए तो बेस्ट है आप अपने फाउंडेशन से पहले वाइट पेंट लगाना चाहिए. लाइक द आई एम नॉट टेलिंग यू द पेंट, एक्चुअली द पेंट वी डू ऑन द वॉल और द बुक. नो, वी गेट सेपरेट पेंट फॉर द मेकअप. दिस इज यूज फॉर द मेकअप थिंग. तो मैं इसमें से यूज़ करूँगी. मुझे कुछ 1000 का मिला शायद, मुझे याद नहीं है. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. I've already put some paint on my face, but उससे पहले मुझे प्राइमर लगाना था, मैं भूल गई थी. इतनी एक्साइटेड थी इसको करने के लिए. बट ओके, आई विल स्टार्ट अप्लाइंग प्राइमर ऑन माई फेस. तो okay, so now I will start applying this white paint because I have heard somewhere like it will give a finishing like filter. So before applying foundation मैं अभी white paint लगाऊंगी अपने फेस पे, वो भी lightly, बहुत ज़्यादा नहीं, just lightly. तो इसको blend करने के लिए मेरे को मेरा blending brush मैं यूज़ करूँगी. So you can see I will start blending it here like this. If you are a brown skin, it's very hard to find suitable foundation for your skin tone. बहुत hard पड़ता है. मुझे 3-4 फाउंडेशन को मिक्स करके फिर एक फाउंडेशन बनाना पड़ता है. मैं खुद ही फाउंडेशन का इन्वेंशन करती हूँ अपने स्किन पे. सो आई यूजली मिक्स दीज 2 फाउंडेशन एंड अप्लाई ऑन माई फेस. तभी थोड़ा सा मैच होता है मेरे स्किन टोन से. सो आई एम गोइंग टू डू दैट. ओके, आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस. तो मैं कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की तरफ से. द नोज आई एम गोइंग टू पुट लाइक दिस हियर एंड हियर. So I have already blended all the contour on my face and it looks so smooth. तो एक्चुअली मैं अभी एक पूरा बेस बना है मेरे मेकअप का. अब मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी जो मैंने आपको दिखाया था. I know it took so long and you have to put this kind of effort to get flawless makeup. So this is the eyeshadow. This is the eyeshadow I'm going to use. I bought this from Smitten and it didn't cost me, but I got it through trial points and
with 2 trial points you will get this one. तो इसका शेड कुछ ऐसा है और ये लिटरली बहुत पिगमेंटेड है. जस्ट यू हैव टू टच लाइक दिस एंड यू कैन जस्ट सी इट्स मोर पाउडरी but it's so beautiful. I want to use this but picture में actually में brown use हुआ है, but still I'm going to use this little bit. So I will start applying with this and I will go after that I'm going to use brown one. So let's get started. So now I have already applied here eyeshadow. So now I'm going to take a little bit on my brush, this, and I'm going to apply here. So now this time I'm going to take another brown shade, this one. Now you can see she has put white eyeshadow here and she has blended the brown eyeshadow very nicely, but I have put too much brown on my eyes, so I will try to blend it and I will remove this. So I have done with brown eyeshadow. Now I will start applying red eyeshadow here. So for that I cannot literally draw a straight line, so I'm going to take a guide and that guide will be my tape, a paper tape. मैं बताऊंगी कैसे इसको यूज करना है. So this is how you have to take and stick the tape like this. So for the red eyeshadow, before that I'm going to use this red lipstick. I'm going to take this red eyeshadow here. So I have already put lipstick like this. This is the tape which gave me the guidance to where should I put eyeliner through. तो मैंने red eyeshadow ले लिया इस पे. I will start blending it here like this. So you can see I have done both the sides. Still it's not complete yet. अभी मैं दोनों साइड में eyebrows करूँगी और फिर I will show you the final look. So I done my eyebrows here. So this is the blush I'm going to use. This is from Sugar. और मुझे ये blush बहुत पसंद है. मेरे स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है. आप देख सकते हो मुझे blush कितना पसंद है. मैंने इसको इतना यूज़ किया है, ये ख़त्म हो गया बीच में से. So this is the brush I'm going to use. I will apply some product here. So try to pat it properly, gently, so now you can see it looks so good here. So now I'm going to finish my eye look. उसके लिए मैं आई लैशेस लगाऊंगी. आई लैशेस लगाने के बाद मैं I will show you the full look. और लिप्स के लिए I'm going to use red lipstick. So I will show you that also. So this is my final look. अब मुझे फेक मोल लगाना. फेक मोल के लिए मैं आई लाइनर यूज़ करूँगी और मुझे देखना है इसने फेक मोल कहाँ का लगाया है. So you can see उसने लेफ्ट आई में लगाया है, चीक के पास, एक चिन के पास एंड अगेन ऑन द राइट साइड ऑफ चीक. सो शी हैज पुट हियर, एक इधर और एक इधर. सो आई विल स्टार्ट अप्लाइंग. Okay, so here and then ऑलरेडी मुझे यहाँ पे तिल है मगर वो कवर हो गया है. Okay, and I will put one more. So it's done. एक्चुअली में मेरे पास ऐसा नोज रिंग नहीं है तो उसकी जगह पे मैंने ये वाला नोज रिंग पहना है सिल्वर कलर का. और
ईयरिंग्स के लिए मैंने ये वाला ईयरिंग्स चूज़ किए हैं. So now I'm going to show you my final look. And guys, this is my final look. I have done this makeup like this. You can see. And this is my nose ring, all this my moles and earring. As you can see the comparison here. I tried my best to do makeup like this. So overall I feel it's good. So what do you think, guys? Really, I'm so happy and so grateful if you watched this video till the end. Thank you so much for watching my videos. Thank you so much. And please subscribe and support my channel. So that's it for today's video. I'm going to meet you in my next video. Till then, bye.